सर आपसे मुलाकात हुई थी जीटीओ ब्रेन इनसाइट के टाइम पे एंड दैट वीडियो वाज रियली वेरी हेल्पफुल। बट सर आई वांट टू नो कि आप एक ऐसे पोजीशन पे राइट नाउ जहां आपने इलाहाबाद बोर्ड जो रिजेक्शन बोर्ड के नाम से अमॉन्ग डिफेंस एस्पिरेंट बड़ा फेमस है, हवा बना पड़ा है, और वहीं आप आफ्पा जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं जहां पर रिकमेंडेशन बहुत हाई रहता है। नाउ सर टेल मी, नाउ जहां आप एक असेसर थे और आप एक टीचर है, मेंटोर हैं, दोनों में क्या फर्क बैठ रहा है सर? आपको तो अब दोनों जगह गलती देखने को मिल रही होंगी ना कि ग्राउंड रूट लेवल पे गलती कहाँ हो रही है। जिनको आपने देखा वो थे इलाहाबाद बोर्ड के जीटीओ ऑफिसर कर्नल एस एस हसबनीस साहब। कर्नल एस एस हसबनीस साहब के साथ मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वो थी जीटीओ ब्रेन इनसाइट पर। उसके साथ एक और थी जीटीओ ब्रेन इनसाइट, वो थी डॉक्टर एन के नटराजन साहब के साथ, डॉक्टर कमांडर एन के नटराजन साहब के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो जीटीओ ब्रेन इनसाइट सर्च करो। अब डॉक्टर कमांडर एन के नटराजन साहब के साथ कर्नल एस एस अपनी साहब मेंटोर हैं, टीचर हैं आफा में। सो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक्स एसएसबी एसएसर भी रह चुके हैं इलाहाबाद बोर्ड में और अब आफा में भी सर्व कर रहे हैं। बट उससे ज्यादा हमें कुछ बात समझनी होगी कर्नल एस एस हसमनी साहब से। वो है जीटीओ टास्क। जीटीओ टास्क में करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टास्क होते हैं। 10 टास्क में कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं, और वो कर्नल एस एस हसमनी साहब हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो मुलाकात करते हैं कर्नल साहब से। जय हिंद सर। Jai Hind, Shubham, how are you? कैसे हैं सर आप? Was absolutely fine, yeah. सर आपसे मुलाकात हुई थी जीटीओ ब्रेन इनसाइट के टाइम पे एंड दैट वीडियो वाज रियली वेरी हेल्पफुल। बट सर आई वांट टू नो कि आप एक ऐसे पोजीशन पे राइट नाउ जहां आपने इलाहाबाद बोर्ड जो रिजेक्शन बोर्ड के नाम से अमॉन्ग डिफेंस एस्पिरेंट बड़ा फेमस है, हवा बना पड़ा है, और वहीं आप आफ्पा जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं जहां पर रिकमेंडेशन बहुत हाई रहता है। नाउ सर टेल मी, नाउ जहां आप एक असेसर थे और आप एक टीचर है, मेंटोर हैं, दोनों में क्या फर्क बैठ रहा है सर? आपको तो अब दोनों जगह गलती देखने को मिल रही होंगी ना कि ग्राउंड रूट लेवल पे गलती कहाँ हो रही है। Ground में or the as an assessor and then as a teacher, there is not much of a difference because even in AFPA we don't try to teach them anything about the GTO. We just try to mold the personalities of the individual. Grossly जो बंदा wrong जा रहा है सिर्फ उसी को हम check करने की कोशिश करते हैं and we just try to encourage them to do as well as possible within their capabilities, within their limitations. हर एक बंदे में limitations होती है, there is no doubt about it. मेरे में भी लिमिटेशन होंगी और बाकी जो है उनमें भी लिमिटेशन होगी. नाउ द पॉइंट इज इफ यू गेट entangled in those limitations, that is where the problem comes and that is where AFPA is at the forefront. It really guides the candidates how to forget about the limitations and how to concentrate on your strengths. That is the difference between AFPA and others. Now coming to the SSB, as an assessor, what we are looking for is what the candidate is capable of. Limitations are there, but those come subsequently. If the candidate is wanting to perform and is motivated enough to perform, he will perform. Problem comes when the candidate is too entangled within his own limitations. फिर वो क्या होता है कि it's like you've seen yawning. One yawn and it catches from everybody starts. तो वो वही problem आ जाता है candidate के साथ. That is the analogy I'll use. When she gets into that cycle of negative thinking and negativity, वो उसी में वो घूमता रहता है, उससे बाहर निकलने में फिर उसका मुश्किल हो जाता है. And generally what happens is जैसे GTO में, I'll talk about GTO. GTO में GD1 में या GD2 जो फर्स्ट टास्क होते हैं, जी जी। उसमें अगर उसको लगा कि गड़बड़ हो गई है मेरे से, तो उसी के बारे में सोचता रहता है, ना इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट आई शुड बी concentrating on the task at hand. So that ट्रू। is where the problem is. That is the difference between uh, being an assessor and being a teacher. ओके सर, यहाँ पर मैं एक जरा बात लेकर आना चाहूंगा। आई एम श्योर यू हैव सीन द कैंडिडेट्स जिन्होंने बीटेक करी होगी, उसके बाद कुछ डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट करी होगी, उसके बाद आफ्पा में आते होंगे आपके पास, आपने देखा होगा। एंड यू सी कि एक बीटेक करा हुआ, ग्रेजुएट करा हुआ इंसान फलक्रम कैंटिलीवर से ब्रिज नहीं बना पा रहा है, आइडियाज नहीं लगा पा रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ या आप मतलब क्या है वो कि वो बच्चे को ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए एसएसबी, या देना ही नहीं चाहिए, या ही नीड टू चेंज समथिंग? हाउ ही कैन चेंज समथिंग सर? Okay, first of all, ये जो अनफॉर्चुनेट आइडिया है कि ब्रिजिंग करना है हम. Bridging is just a mode. You must understand. Uh, in the previous interview, also I had told you, you have seen a 6-inch scale. Now that scale
is standard format for everyone. It is same for you, it is same for me, it is same for anybody else. But the use of that scale is what matters. What we are using, the task, the bridging, or the structures which are laid out in the GTO task, they are just a task. It is not the completion of the task per se. Completion, obviously, once you have given a task, you have to complete the task. That matters, but more than the completion of the task, it is the interaction that takes place between the candidates while they are completing the task. They are competing also. They are cooperating also. So all these aspects come into the. Now a person may be brilliant. He may be a IIT. He may be a scientist quality person, and he may be able to all maybe be able to construct also better obstacles than what are there already in the GTO grounds. But what is the use if he is not able to gel with the team? So the aspect of individual not able to do a task and getting recommended, and a person who is able to do the task and not getting recommended, the difference is in the interaction that he does within the group. That is what is important. ठीक है सर, ये तो फेयरली मोटा मोटा हो गया। चलिए मैं आपको जरा स्क्रीनिंग पे लेकर आता हूँ, फिर मैं वापस सेकंड स्टेज पे लेकर आऊंगा। स्क्रीनिंग, Cool, cool. अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स को कोचिंग में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे मैं आपको हाथ पे गिनाता हूँ। नंबर वन, कि आपको इनिशिएटर होना है। नंबर टू, पूरे ग्रुप में आप 2 से 3 बार कम से कम बोलेंगे बोलेंगे। नंबर थ्री, कुछ ना कुछ स्टोरी में ऐड करते जाना है। अब जरा मैं लेकर आता हूं जीटीओ जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सिंपल से ये कहते हैं, यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू एक्ट लाइक अ ग्रुप एंड यू हैव टू ब्रिंग आउट अ कॉमन स्टोरी। दैट्स इट, सिंपल होता है। Correct, अब correct. ये दो फ्रेमवर्क हैं, हाउ डू यू सी दोस किंग, कौन गलत है, ये जो कोचिंग वाले बता रहे हैं या जीटीओ साहब जो एसएसबी में बस समझा नहीं पा रहे? Neither of them is actually wrong. ओके। You know why? You know why? Because if the coaching institute or as a teacher, if you are coming to me हम्म। and tell you, okay, this is the picture, and you can generally, whatever story you have made, you're generally on the right lines. If I leave it at that, it's perfectly fine. Because I am allowing your imagine. It's a test of imagination. At the end of the day, it is a test of imagination. I can't tinker with the imagination that you have got. हम्म। So when the coaching institute or the guider, whoever whom you go to, tells you, and he doesn't tinker with your imagination, that's good. The moment you start tinkering with the imagination, the candidate is neither here nor there, नाइदर because हियर he नॉट। will think, he will think on his own, and then he'll start to make a template out of what has been taught to him. You understand what is the यस सर, template? Now that आई एम 6-inch अंडरस्टैंडिंग। scale, जी जी now जी now that 6-inch scale comes into जी। existence. Now the 6-inch scale, if I put on a India map, say which is 4 by 4, will take me from maybe Pune to Nagpur. But if the same map is 2 by 2, then I'll reach Delhi with the same scale. जी 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 So you understand the difference. जी। So it is just a guideline that has been given. Now the point is your originality, the candidate's originality comes out, and that is where the candidate must understand. He's got a mind of his own. He's coming for selection as officer, isn't it? यस सर, बट यहाँ पर मैं ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको 3 बताए थे, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, ग्रुप में बी इनिशिएटर। सेकंड इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वहां पर कि 2 से 3 बार बोलना है, और तीसरा इंस्ट्रक्शन ग्रुप में कुछ ना कुछ बोलते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब ये जो 3 इंस्ट्रक्शन है सर, आपको नहीं लगता कि उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐड करा जा रहा है? सर सोच के देखिए। नहीं, 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 सर वो इस बात को let me भूल रहा, not मैं accept. आपको 1 मिनट मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं Okay, करना okay, चाहूंगा। please, 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 वो please. एक इंस्ट्रक्शन जो जीटीओ एसएसबी में दे रहा है उसे भूल जा रहा है, शायद मेरे हिसाब से वो ये भूल जा रहा है कि आपको कॉमन स्टोरी पे पहुंचना है। उसको 3 बातें याद रह गई जो कोचिंग में सीख कर आया, बट जो जीटीओ ने एसएसबी में बताया, आई थिंक वो शायद वो भूल जाते हैं इस बात को। Maybe that is the thing. I'll tell you what happens. Especially हम्म। there's a difference between here. There's a difference between a fresher and a repeater. ओके। Because fresher are they don't know exactly how things are going around. Out of the set 18 to 20 candidates who are sitting in this discussion part where the narration of the discussion takes place, maybe 10, 12 of them are coached, maybe or more. But there are half of them at least you can say who have come uncoached, who don't have the facility of coaching, who have not been able to take coaching, or they think that they are capable of doing so. Half of them are not coached, half of them are maybe coached. Let us presume that way.
Now, in this case, what happens is the the story that the candidate has made. Now he is trying to project himself. Now in the fresher, what you just said about at least speak 2 to 3 times, be the initiator. In the fresher group, it is quite possible that you may be able to follow this kind of a instruction. But in the repeater group, where people have come, they know what happens. So they are quite familiar with the system. So they jump into the fray as if it's, and very rightly, for them, it is a make or break. So everybody is talking. So over there, being an initiator has got no meaning. Okay. Unless, of course, the group is very mature and the group is pretty inactive, to say the least, then only you can be an initiative. But in a repeater group, that's unlikely to happen. First. Secondly, in a repeater group, everybody is talking. So you speaking 2, 3 times also has got no meaning. But the point which here comes in case you get a group where you can speak, why they say 2, 3 times is because the duration of the discussion is about 10 to 12 minutes. There are 20 candidates. If you start speaking, you can speak maximum 30 seconds, 30 to 40 seconds you will get. Provided everybody, let us presume that everybody is very active. 30 to 40 seconds. If everybody is not active in a group, then maybe you will get up to 1 minute. So you will be able to speak, say, break it into 3 times. So 20 seconds, so maybe 2 to 3 sentences at one time you will be able to speak. So that is why they say ki, one moment you get a chance, try to speak, because at least you will be able to consume 30 to 40 seconds, if not 1 minute. So Okay. that's why that is what. This is basically for shy candidates who are mild candidates. But people who are active, a person like you, I don't really have to tell you how to go जी, about talking. जी. It's like that. So that is what is important. That is what it is. It Okay, is sir. just as a padding up, encouragement. Okay. So my next question is, I think it will be one of the most common words you have heard, and I'm sure you are familiar with these words. हम स्क्रीनिंग में मतलब हम जितने भी डिफरेंस एस्पिरेंट होते हैं सर मानते हैं बहुत कि स्क्रीनिंग इज अ गेम ऑफ लक एंड स्पेशली आपके जो जीडी आप जीटीओ रह चुके हैं सर जीटी से तो हम लोग की ज्यादा खता होती है क्योंकि फिश मार्केट हो जाता है और हमें वापस जाना पड़ता है और हमें लगता है कि शायद जीडी एक वजह बन गई जिस वजह से हमें घर जाना पड़ रहा है सो डू यू ऑल्सो बिलीव दैट द स्क्रीनिंग पार्ट इज अ गेम ऑफ लक To a large extent, yes, I totally believe in that, ओके especially for the repeaters, because it becomes a total fish market. ओके That is one aspect. Because what happens is, because it is a fish market, there is no logical or viable discussion that takes place. So actually, what is happening is you can remove the discussion part from the selection process totally. What is going to happen if everybody is shouting at the top of their voice? You can't hear, you can't make out what anybody is saying, सर आई isn't लाइक it? टू टेक अ पॉज ऑफ योर्स राइट नाउ ओवर Yeah, हियर yeah. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ मैं चाहूंगा दोनों का आंसर आप एक साथ दे दें आई एम श्योर आपने भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग कभी स्क्रीन आउट हुए ही नहीं इनफैक्ट रिकमेंड ही हुए हैं हर बार either they are being conference out or they've been recommended multiple Okay, times okay, so if it is a game of luck how these people have made it okay. That is where the game of luck is only as far as the discussion goes. okay इससे पहले तो कोई गेम ऑफ लक नहीं था. Narration is in your capability. Writing okay the story is in your capability. okay Your imagination is in your capability. Your intelligence test is in your capability. okay So there is no luck involved in this as far as this part goes. Discussion, yes, because you don't know what kind of group you're going to get. That is where the luck is. And also, if everybody is talking at the top of their voice and making a fish market, then despite GTOs break up the group, at times they break up in 3 groups also. Despite that, six, 7 people also, they are just don't understand कि now आप 6 में बढ़ चुके हो, 8 में बढ़ चुके हो, at least have a sensible discussion, but they just don't believe in that. So they carry on. They think this is my last bastion, I must get through. So that is where the luck comes in. The aspect of the other part, there is no luck. Imagination is your control. Improving imagination, putting across a better story, narrating it in a better form so that it is more attractive to the other candidates. I've seen in a repeater group where the entire discussion is like cats and dogs fighting against each other, but still one particular candidate story is picked up by most of them.
So True, there is sir. no luck in that aspect. Okay, Okay. there's no luck in that aspect. Okay, great. So I've cleared the words. ठीक है, मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ वापस स्टेज 2 पर. स्टेज 2 में आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट सेकंड डे से हमारा जीटीओ स्टार्ट हो जाता है सर. एंड व्हेन वी मूव टू द फर्स्ट जीडी पार्ट, ठीक है, आप Okay. Yeah. महसूस कर पाते हैं देयर इज ऑलरेडी अ बॉन्डिंग हैज बीन मेड बिटवीन द ग्रुप बॉयज और गर्ल्स आने से पहले यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता तो होता ही है नहीं, कि नहीं होता. मे बी फर्स्ट ग्रुप, दी फर्स्ट चेस्ट मेंबर्स जो होते हैं ना, एक से लेकर के से 6-7 तक, उनमें शायद हो सकता है. बट उसके बाद हाउ डू यू नो यू आर गोइंग टू बी इन द ग्रुप नंबर 1? सर ग्रुप नंबर नो नहीं, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 3, लेट मी टेल यू, मेरा ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, मैं भी इलाहाबाद से आया, ओके. तो हम लोग की दोस्ती ओके. हो गई थी, हमें तो पता था कि हम जीटीओ में एक साथ जाने वाले हैं. सो ओके. रियली नो अबाउट इट कि जब हम जीडी में बैठेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जीडी में ऑप्शन होता है कि हम टॉपिक चूज करेंगे. करेक्ट. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यार सुन, पहले सबकी गर्दन देख लेंगे टॉपिक कौन सा है जिस पे ज्यादा बोल पाएंगे, सब लोग उसी पे हाँ करेंगे. एंड द टॉपिक वाज one on the corruption was there, and there was exercise was going between Australia, China, India. I'm not forgetting the name. So हम करेक्ट. जानते करेक्ट. थे कि यार ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उस पर तुम बोल नहीं सकते, क्या बोल लेंगे. तो हम लोगों ने आसपास को देखा एक दूसरे को और हमने कहा कि ये तो नहीं बोल पाएंगे, ये करप्शन वाला ले लेता है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड विद अस. सो आप ये महसूस करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं. एंड व्हाई नॉट यार, मेरे को एक बताओ. यू आर फॉर्मिंग द ग्रुप, इजंट इट? हाँ सर. दैट इज द फर्स्ट टास्क. दे आर कमिंग टुगेदर. हम्म. ओवर देयर एवरीबॉडी इज एक्सप्लोरिंग ईच अदर, जी. इजंट इट? व्हाट इज हैपनिंग इज कौन कितने पानी में है वो चेक कर रहा है. हम्म. भले यू फाउंड फॉर्म्ड अ गुड बॉन्ड विथ कपल ऑफ देम, ठीक है, बट स्टिल इट इज जस्ट अ टेम्पररी बॉन्ड. ओके. It is not as if you are coming from class second or third days where you know the other person inside out and he also knows you inside out. It's not like that, isn't it? You have formed the bond because maybe your personalities are similar, maybe you like the way you interact with each other initially. But here, अभी तो सिर्फ first task है. Once the competition starts, you will find दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. फिर बॉन्डिंग अलग हो जाती है ना. जी 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 जी, बॉन्डिंग अलग होती है, कमांड टास्क में पता लग जाती है कितने को बुलाया बिल्कुल, जाता है, उसमें बिल्कुल, समझ में आ बिल्कुल, जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ग्रेट. सो लेट मी गो फॉरवर्ड विद, मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि जीडी में करंट अफेयर्स में फैक्ट्स और उसकी वैल्यू कितनी लॉजिक की, तो आपने दोनों को एक तराजू में ही तोला था कि दोनों ही चाहिए, ऐसा नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते. बट सर लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग. ये देखा गया है, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, that you're very interested in a person view rather than the views he got from news channel or some from newspaper. So why there's so much importance we have seen that कि आप लोग सामने वाले की views पे ज्यादा importance रखते हैं कि उसका क्या मानना है. मेरे को एक चीज बताओ. हाँ जी. यू आर फेसिंग द चाइनीज पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, सिटिंग अक्रॉस द जी. बॉर्डर, एंड द चाइनीज स्टार्ट एडवांसिंग टुवर्ड्स यू. जी. उनके पास वेपन्स नहीं है, डंडे ही हैं, हाँ. जैसे नॉर्मल आमतौर पे होता है चाइना इंडिया बॉर्डर पे. जी. क्या करोगे तुम उस समय? तुम क्या अपने दोस्तों की तरफ देखोगे, अपने जवानों की तरफ देखोगे, या अपना खुद का व्यू, खुद का ओपिनियन, खुद का ऑर्डर बनाओगे? सब खुद तुमको का. सीओ ने कुछ एक जनरल गाइडलाइन दिए होंगे, हाँ जी, हाँ जी. इजंट इट? जी जी. Baki CEO is also not there here to help you out. You have to think on your own. You ओके. have to form your own decisions at that particular time. ओके. So you got to have an opinion of your own. It may match with the group. It may not match with the group. Okay? But does it match with the overall idea of a society? In case the topic which is given to you is, say, a violent crime हम्म. and punishment given to a violent crime, हम्म. can you have a view of Hyderabad kind of a encounter? Certainly not, isn't it? जी जी जी. It it does not gel with our democratic values and the democratic way of functioning. हम्म. ठीक है? So you may say कि they deserve that kind of death, but it is not in our, it is not correct on us to carry out the sentence. And it's like then wild west हो जाता ना, अमेरिका वाला कि मेरे को तेरा चेहरा पसंद नहीं इसलिए मैं तेरे को शूट करूंगा. It cannot happen like that. जी 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 ठीक जी. है? Okay, fair enough, sir. So I like to move with the second and very important task is lecturate. Okay. Lecturate में 4 टॉपिक आते हैं सर. इस बार क्या हुआ था मेरे केस में, 4 टॉपिक आए और चारों ऐसे आए कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे, मतलब बहुत ही दमदार थे, करंट अफेयर्स रिलेटेड थे. तो उसमें आया हैकिंग. Okay. सो आई वाज बाकी मुझे नहीं सुना है, प्रेसिडेंट पे बोलो,
करंट अफेयर वगैरह मुझे नहीं आया, समझ में नहीं आया, मुझे हैकिंग याद आया एंड आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय व्यूज एंड आई ब्लैंक विद द फैक्ट्स। मैंने जितनी नॉलेज आज तक जो हैकिंग का कोर्स किया था वो उठा के मैंने प्रेजेंट कर दी। फेयर इनफ, आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, आई हैव सीन वन यू नो यूनिफॉर्मिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट, दैट इज हाथ पीछे और सामने बोलो। क्या जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा हाथ यूज करके, इज इट नॉट एट ऑल अलाउड? There is nothing not allowed in the SSB. Yeah, you have to be natural. बट सर That ये is तो the डिलायमा beauty तो of it. No, this is where the disservice is done. When somebody tells you कि you stand in the Vishram position. ओके। विश्राम पोजीशन में क्यों बोला जाता है खड़ा होने के लिए? यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके। why बोला जाता है, because otherwise what will happen, you will speak with your hands rather than your mouth. ओके। We don't want your body to talk to us. That will automatically talk, no doubt about it, with your expressions, with your eyes, the way you make your faces, the way you nod your head, the way you move your body left and right, even when standing in Vishram. But if at a particular point you want to emphasize, you got to use your hands also. So be natural about it. It should not be artificial. Whatever you do, it should not be artificial. It should not be because Hasabnis has told Shubham to behave in the manner, Shubham will behave in that particular manner. Sorry, we want Shubham, not Hasabnis. ओके। ग्रेट सर। समझ गए आप? ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट वर्ड्स सर। मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा स्नेक रेस को। In the जी, snake race, what I found, the people, natural behavior came up because उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता आपको कोई, आप भाग रहे हो correct, वन टू बी absolutely, पॉइंट, राइट? absolutely, तो वो absolutely. तो मेरे हिसाब से आपको जज करना बड़ा आसान हो जाता होगा कि यार ये बंदा क्या है, क्योंकि इनफैक्ट मैंने देखा है बच्चे गाली तक भी निकाल देते हैं क्योंकि उनके स्लैंग में होती है कि ना, वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल साले उठ क्या कर रहा है। मैंने देखा है, मेरे साथ ही हुआ है। सो द वे द डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द होल टास्क, आई एम पर्सनली बिलीव आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा जज करना कब कहाँ क्या नहीं गलती कर रहा है। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज सारे 40 बंदे या सारे 30 बंदे या जो भी तीन चार ग्रुप जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग एवरीबडी एल्स. ओके। We are just watching. The GTO watches his own group. ओके। Okay, first of all, and secondly, जनरली बाय देन दी जीटीओ नोज कि मेरे को किसको किसको ध्यान देना है. तब तक वो जो क्वेरी एरियाज है, शुभम थोड़ा झगड़ालू लगता है, या शुभम थोड़ा लेस कोऑपरेटिव लगता है, या शुभम थोड़ा अग्रेसिव लगता है, या शुभम इज वेरी ब्राइट एंड ही इज बट ही इज ऑन द प्लम्पर साइड. सो लेट मी सी हिज फिजिकल एक्टिविटी. विल ही बी एबल टू डू द फिजिकल एक्टिविटी? ठीक है. मैंने पीजीटी में उसको देखा होगा कि थोड़ा सा हाई ऑब्स्टेकल है तो उस पर हेजिटेट किया था उनका. So let me see what is it. So all these queries are already there. You may not realize it, but the GTO carries a small little pad in his hand. जी। You will not see a paper होता है normal छोटा सा. ठीक है. Sometimes they carry a pad also, clipboard भी होता है, but आजकल वो clipboard system शायद बंद हो गया. But छोटा क्या करता है उसमें वो keeps noting कि जो भी उसकी queries थी ये already लिख के रखता है, और उसके बाद में वो उसको कट या टिक या जैसे भी उसका सिस्टम है वो फॉलो करता है. सो एंड अबे साले उठ, हार जाएंगे. दिस इज नॉट अ गाली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू दिस वे, ओके। बिकॉज वी ओवरलुक दीज थिंग्स. ओके। दीज आर माइनर इश्यूज. These are minor issues, because if you can give a josh to a person by any manner, that is what we are looking for. We want people who can encourage others, who can be cooperative, who will follow the rules in the heat of the moment. ठीक है. It should not happen that Shubham goes and bangs somebody's head on the wall because बंदा मोटा है और दौड़ नहीं पा रहा. ऐसे नहीं होना जी चाहिए, जी जी isn't it? जी। So that is exactly what we are interested basically. ओके ग्रेट। बट सर मुझे ना ये स्नेकनेस बड़ी पसंद है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली व्हाई। एक तो उसमें सांस मतलब फूल जाती है, क्योंकि सांस फूल जाती है ना, इंसान की सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो फैब्रिकेट करके प्रेजेंट करना चाह रहा है वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, व्हाट आई बिल्कुल ऑब्जर्व। अब होता क्या है कि बिल्कुल. इसमें जैसे लेडर वाला होता है जिसमें आपकी रोप से चढ़ना होता है आपको, वो रेड मार्क होते हैं कई जगह, कई कई जगह करेक्ट छोटी छोटी प्लेस में, पूरे स्नेक रेस में कुछ ना कुछ रेड होता है। वो बता दिया गया होता है कि आपको रेड पार्ट टच नहीं करना, इज आउट ऑफ द बाउंड। नाउ करेक्ट व्हेन यू करेक्ट करेक्ट सी योर ग्रुप रेड करेक्ट मार्क है, टच हो गया है, तो आप कहते हैं देयर इज अ पेनल्टी, जाओ दोबारा करके आओ। करेक्ट. करेक्ट। और आप पूछते भी हैं क्या कोई गलती हुई है, और बच्चे हाँ, ऑनेस्टली बताते भी हैं शायद बिल्कुल पता आप बिल्कुल कि भाई हमसे गलती हुई है और आपने वापस बोल दिया। सो हाउ डू यू टेक दोज थिंग्स, बिल्कुल. बिकॉज कहीं ना कहीं वो तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता होगा ना सर
कि सेंस ऑफ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, अभी अभी जैसे एग्जांपल तुम्हारा ही ले। Suppose in a particular number 3 or 4 obstacle, while climbing up, climbing down, helping anybody, you broke a rule, and there at the end of the that particular obstacle, generally the GTO gathers the group and then asks, yeah, any rules were broken. Everybody said yes, sir, one rule was broken, but you didn't speak. There could be two reasons why Shubham didn't speak. Because Shubham is tired. That's why he was taking a breath, and that by then everybody is saying spoken. So we know realize that I also expect the GTOs realize it. Secondly, again, yeah, any other rule broken. If he repeats it, and again in that repetition also you don't raise your hand or say yes, then the question of the aspect of not following rules comes in. You must understand these are tests. These are just yardsticks. These are just queries that we are raising. It's not, we are not forming any judgment about abhi tak. These are just कि Shubham is being compartmentalized. Okay? Now those compartmentalization will be subsequently in the future tasks they will be further clarified. ठीक है? So अभी अभी तो just चल रहा है group जी बढ़ ही रहा है आगे. जी जी जी। ठीक है? ओके सर, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ, योर सन्स और ऑल्सो इन द आर्म फोर्सेस, और आपने ऐसे भी देखे होंगे जो रिपीटर हो रहे हैं, आपके बच्चों ने भी वन स्टेप रिपीटर होकर भी एक यूनिफॉर्म पाई है। तो मैं जानना चाहूंगा दैट हाउ डिड यू सी, आपने अपने बच्चों में देखा है, खुद भी आप आर्मी ऑफिसर हैं, रह चुके हैं, दूसरे के बच्चों को भी देख रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि इनको क्या क्या करना चाहिए जिससे बदलाव तेजी से आ सके? क्योंकि आप कह रहे हैं पर्सनैलिटी, आपने पूरा अभी तक पर्सनैलिटी पे बोला, यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ मोड अकॉर्डिंग टू राइट व्हाट इज राइट, बट कैसे, हाउ? देखो, first of all you must understand, have you seen your parents ever telling you to do, or ever even heard them discussing about you and telling me, believing that you will do something wrong? ना? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। है ना, नहीं चाहेगा ना. जी Same way, you must understand, if you just follow the bringing up rules of your parents, all the qualities are developed. The problem is of the youth. You are at that stage, generally 16, 17 onwards till about 23, 24. This is the most age where people want to rebel. Now they generally rebel against whom? They generally rebel against rules. It is not the parents they are rebelling against, because parents lay down certain guidelines, certain restrictions. The same thing happens even in SSB. The GTO or the interviewing officer or the psychologist lays down certain restrictions. Either it is in terms of time, either it is terms of rules, or it is in terms of the questions that are posed to you by the three techniques, isn't it? जी Now, that is where the candidate rebels. He doesn't accept that what has been told to him, I will follow, but it will be as per my requirements. Perfectly fine. Absolutely nothing wrong in that way of thinking. Okay? As long as it is for the betterment of the group that he is in, it is perfectly fine. हम्म So, what to do differently? Nothing has to be done differently. That is exactly what I'm trying to tell you. You be yourself and you will get through. ओके फेयर इनफ। No child, I can tell you this, no child is there who doesn't have obsolete qualities. No child. Everybody has got them. It's only that certain people are a little more confident. Take your case. It could be bordering on overconfidence. Okay? जी So, and there are other people who are underconfident. There are certain issues. Everybody has got certain issues with it. But the only thing is, it is just अभी एक स्केल जो है तुमको अच्छा लगता है कि लोअर से अप जाना. बिजनेस ग्राफ इज ऑलवेज दिस इज बेटर जी ना. ठीक है. बट देर आर ऑल्सो सम बिजनेसेस विच प्रेफर दिस डाउनवर्ड लाइन. अभी अगर मेडिकल वाला है, यहाँ पे आप गए हो उसके पास, तो ही प्रेफर द ग्राफ गोइंग लाइक दिस ना फॉर यस यू. सर। दैट्स ऑल्सो बिजनेस. So that is what it is basically. Some certain places where you require certain qualities, they are there, but they are not developed all that much. That is the only thing that you need to understand. Okay, great. So I like to bring one question in front of you, which is, is hidden in my heart also, and because of this one reason I like to come after.
AFPA is one of the highest giving officer academy in entire nation. Okay. इतना है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं AFPA को कॉल करता हूँ, AFPA को नहीं पता था कि उनके यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा रिकमेंड हो गया। उनको मुझे बताना पड़ता, सर आपके यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा रिकमेंड हुआ है, उसका मेरे को कॉल आया है। ये हाल है। Okay. And this is because of one reason, I have a keen interest to go to AFPA. What is happening? Okay. So what is happening in those 14 days? Because 14 days cannot be the magical, and I'm sure you do not have any kind of syrup or something which turn them into an officer. Dekho, you must understand one thing. Hmm. Practice. There's a beautiful thing called practice. Hmm. Uh, Churchill was once asked. Churchill was known for never making any mistake, literally never making any mistake whenever he addressed the parliament. No wrong facts, no waffling, no repetition of sentences, no using the wrong words at the wrong time, on using only the correct words at the correct time. So he was once asked, how do you manage this? So he says, practice. But you are the Prime Minister of England. Where do you get time? You understand how a Prime Minister is busy? जी Even जी. our Prime Minister, if you see. So the answer, you know what he gave? I practice before breakfast, I practice during breakfast, I practice after breakfast. I practice before lunch, I practice during lunch, I practice after lunch. I practice before practice, I practice after practice. Practice is the only thing. Now, what we do in AFPA, we make them practice speaking. Now, speaking is the bugbear of most of us Indians. One of the basic problems is English speaking. English is not the language which gets you through SSB. Let me tell you very, very bluntly. Otherwise, there are a lot of people who are rustic, who speak in a very, very rustic manner, who are totally unanglicized, you can say, but still they get through. It is basically because they don't have, they are not worried about how they speak English, but they use the correct English, even if they substitute some words in Hindi. Okay, so that is what is more practicing is all about. They will learn. Nobody learns his mother tongue also overnight. Yeah, a child also keeps repeating the same thing again and again. Then only he learns it, isn't it? So that is what in AFPA what we do. We make them speak. We make them interact with number of people. Then we've got certain tasks. We do not tell them how to tackle the task. The normal group planning exercise, the GDs which we do, we just cover the aspects that are required by the candidate. Like if the candidate does not address the issue of the GD, then we tell them the topic was this. If the topic was a particular topic, then the knowledge is not there. So they need to increase the knowledge. So the wide base of current affairs they are exposed to. So they are confident about at least speaking something in the GD. In the group planning exercise, one practice is more than sufficient because you just need to be introduced to group planning exercise. Thereafter, story कौन सी आनी है आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम. नहीं, गुड गुड सर, गुड सर। मैं यहाँ पर आपका एक पॉज देना चाहूंगा। आपका रिकमेंडेशन के Okay. लिए जाना ही जाता है, बट एक उनका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। वो स्ट्रांग पॉइंट ये है कि स्क्रीनिंग में उनके बच्चे आउट नहीं होते। नाउ आपने गेम ऑफ लक भी कहा था, देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ गेम ऑफ लक जीडी में। सो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट योर स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्क्रीन इन फॉर श्योर? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन, अगर 30 का बैच होता है आपका, आई एम श्योर 30 का बैच मुझे एग्जैक्टली याद है, 30 नंबर होते हैं, और 30 में से 28 29 फॉर श्योर हो जाते हैं स्क्रीन। एंड इनफैक्ट मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, 28 29 हो रहे हैं तो हाफ रिकमेंड होकर बाहर आते हैं। I like to focus Okay. on screening because the screening is one of the biggest difficulty. Screening ना होने के कारण से लोग अपना कैरियर ऑप्शन ही बदल देते हैं, शायद डिफेंस मेरे लिए नहीं है। You are absolutely right because it's a very heartening and demotivating aspect when you go back from screening itself. जी Because some of the candidates are really wonderful. I can tell you this very, 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 very bluntly. Also, here, one aspect is the reason why AFPA is so successful because of ओके what we do there. We carry out at least 5 to 6 practices for stage one. That is one thing. So in that, the discussion part is dwelled upon quite a bit. More than the other aspect, the discussion part is built on quite a bit. We do tell them where they are going wrong, and when the fish market is going on, how to go about dealing in the fish market. Because fish market is something which you have to deal with in your own way. The way
the way which you can. Basically, you have to carry on with it. There's no choice about it. So when we break up the groups also during practices, we tell them this is how it is to be done. We have to practice. We have to give out your story, and then the narration part. We concentrate quite a lot on the narration part, because that 1 minute which is there with them, that is golden minute, you can say. So just before the actual attack starts in the GD, the 1 minute is the absolutely dull or no disturbance kind of a time where they can give out their complete story which they have written. So that is one thing is there. And we carry out tests of imagination, by the way. We do carry out certain tests of imagination, leaving aside the picture, PPDT per se. We carry out certain tests which improve the imagination, which forces the candidate to think differently. Okay. ओके, फेयर एनफ सर, बट आई हैव हर्ड वन मोर थिंग। ये आपने थोड़ा मोटा मोटा बताया, जरा मैं थोड़ा स्पेसिफिक जानना चाहूंगा। मैंने सुना है जो आप स्क्रीनिंग कराते हो जस्ट रेप्लिका कराते हैं, मींस वन जीटीओ, वन साइकोलॉजिस्ट, वन इंटरव्यूइंग ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑल द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स in every GD, means 5 to 6 times. Is it right? टू टू तो होते ही होते हैं, दो तो होते ही है, इफ नॉट थ्री. Okay. इफ थ्री आर पॉसिबल, थ्री, अदरवाइज दो तो होते ही है. It does not matter if it is a psychologist and a GTO sitting or an interviewing officer and a GTO sitting. It could be two interviewing officers, it could be two psychologists, or it could be two GTOs. It's based on the availability. अभी GTO एक ही होगा तो एक ही बैठेगा. ओके, सो ऑफिसर्स ही वो कंडक्ट कराते हैं 5 से 6 बार, तो अंदाजा हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल तुरंत बिल्कुल फीडबैक मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल उधर ही फीडबैक दे देते हैं. वी डोंट डिली डाली. डिस्कशन हुआ उधर ही फीडबैक, सो दैट देयर इज नो नथिंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड. ओके, And naturalness of the candidate is retained. If you give a written kind of a feedback, then the candidate goes back, and it is nothing like that. It is what you did, and this is what where you're going wrong. This ओके, is what we do. सो 5 6 बार एक ही गलती करने के बाद उनको पता लग जाता है कि अब क्या करने वाला है। सो एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल हो बिल्कुल. गई 5 से 6 एसएसबी की स्क्रीनिंग आपने पकड़ा दी, उनका टेस्ट हो गया, गलती सुधार ली और मेन एसएसबी में ठीक कर गया है। सो दैट्स हाउ हैपनिंग। ओके, दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू फॉर योर ग्रेट टाइम सर, एंड थैंक यू फॉर वैल्यूएबल वर्ड्स सर। Thanks a lot, Shubham. It was wonderful interacting with you. It was really wonderful interacting with you. Yeah. थैंक यू सर। जय हिंद सर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।